Bismillahirrahmanirrahim. Question 1 part 13. Y is equal to x power 40. By definition डेरिवेटिव के लिए y plus delta y equal to x plus delta x. क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी. x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 40 को सॉल्व करने के लिए पावर चूंकि नेचुरल नंबर है तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे. a प्लस b होल पावर n nc0 a पावर n nc1 a पावर n minus 1b plus nc2 a power n minus 2b square up to so on ncn b power n. यहाँ पावर n जो है वो 40 है, जैसे 40 से 0 a की जगह x पावर 40 प्लस 40 से 1 x पावर 39. x की पावर एक कम होती जाएगी और साथ इसके डेल्टा x आएगा प्लस 40 से 2 x पावर 38 इंटू डेल्टा x स्क्वायर अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म में NCN तो यहाँ पे 40 C 40 डेल्टा x होल पावर 40 की कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1 40 C 1 40 x पावर 39 इंटू डेल्टा x. ये 40 इंटू 39 divided by 2 into 1 x power 38 delta x square up to so on. 40 से 40 भी 1 बनेगा तो this is delta x whole power 40. माइनस ये x पावर 40 जो लास्ट टर्म है ये साथ से चलती रहेगी. इस तरह ये प्लस x पावर 40 इस माइनस x पावर 40 से कैंसल. कॉमन देख लेते हैं. एक तो 40 डेल्टा x कॉमन है. दिस इज 40 x पावर 39 प्लस जैसे अगर कैंसिल करें 20 इंटू 39 x पावर 38. एक डेल्टा x कॉमन ले लिया, एक रह जाएगा डेल्टा x अप टू सो ऑन. यहाँ से एक डेल्टा x कॉमन तो 39 पावर. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x and taking limit delta x approaches to 0. This is 40x power 39 written as it is up to so on. Delta x power 39. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा है dy by dx. लिमिट अप्लाई करेंगे. यहाँ डेल्टा एक्स को 0 रखें तो ये 0 हो जाएगी टर्म अप टू सो ऑन. इस डेल्टा एक्स को 0
So dy by dx is equal to 40 x power 39. By definition इसका डेरिवेटिव x पावर 40 का 40 x पावर 39. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास y equal to x power minus 100 y plus delta y equal to x plus delta x power minus 100. Subtracting 1 from 2, so this is y plus delta y minus y equal to x plus delta x power minus 100 minus x power 100. और नेगेटिव इसलिए हमें बाइनॉमियल सीरीज लगानी पड़ेगी और उसके लिए फर्स्ट टर्म मान होना ज़रूरी है. Multiplying and dividing by x minus x power minus 100. फर्स्ट टर्म को 1 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. x पावर माइनस 100 यहाँ 1 आ जाएगा. दिस इज डेल्टा x ओवर x. दोनों टर्म्स में x पावर माइनस 100 कॉमन. दिस इज 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर माइनस 100 और ये x पावर माइनस 100 कॉमन लेंगे तो 1. दिस इज 1 ओवर x पावर 100 पॉजिटिव पावर. Now applying binomial series 1 plus nx plus 1 by 2 factorial n into n minus 1 into delta x over x square up to so on. लास्ट टर्म माइनस 1 और वो माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल होगा. कॉमन डेल्टा x ओवर x कॉमन आएगा. दिस इज माइनस 100 2 फैक्टोरियल 2 minus 100 into minus 101. डेल्टा x ओवर x हमने कॉमन लिया है. एक डेल्टा x ओवर x यहाँ आ जाएगा up to so on. Now dividing both sides by delta x and taking limit delta x approaches to 0. ये x पावर 100 ये x पावर 101 minus 100 become as it is so on. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो dy by dx. ये डेल्टा x से कैंसिल. अप्लाइंग लिमिट ये डेल्टा x वाली टर्म 0 हो जाएगी अप टू सो ऑन. Therefore dy by dx is equal to minus 100 over x power 101.
x पावर माइनस 100 का ये डेरिवेटिव आ गया।